ओके, I'm back. थोड़ा सा एफ कर दिया लाइट ने मेरे साथ, बट इट्स बैक अगेन. पावर इज बैक. तो आई विल join again shortly. Just once again. How to connect. यार ये बंदा शुक्र मना रहा होगा मैं छोड़ के चला गया. ये I am backs, boys. I am backs. Thank you Farab. Thank you. Farab. जब तक ये लोड होता है, लेट्स धांसू सा एक म्यूजिक चला देते हैं. ठीक है, धांसू सा एक म्यूजिक चला देते हैं. दिल हमारा लाइलाज है, दिल हमारा लाइलाज है, बस इश्क 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 ही दिल है. रीजनेबल सस्पिशन मतलब एक बिलीफ होता है कि अगर इफ़ यू थिंक दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड और उस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और नीडेड है, तो दैट इज़ आ गया रीजनेबल मैं वापस. सस्पिशन. एंड probable cause is more of a logical thing. Like अगर मतलब आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस है और एक फैक्ट है कि मतलब जैसे कोई क्राइम कमिट होने वाला है या फिर हो चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ पे डायरेक्ट अरेस्ट या फिर यू कैन गो फॉर डायरेक्ट अरेस्ट और समथिंग लाइक दैट. Sorry to cut. What is your name, buddy? माइकी जोन्स. Mikey John. What was your previous experience? YouTube Last चैनल के बिना business सिर्फ चिल brand? मारने के लिए सर्वजन बिल्कुल कर सकते हैं निमेश क्या था? भाई. सॉरी. नहीं, Department Yes. he in the form he is written he is not experienced. is not experienced. Okay. Hmm. ठीक है. और तेरे पास एक्सेस है ना? सी मेरे साथ जरा ट्रेन ही आ जाओ, मेरे को एक्सेस दे दो. क्या? मेरे पास भी है. यस यस यस. क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ Okay, आपको कोई एक एग्जांपल से बता सकते हैं? और शीट का एक्सेस दे दो. एग्जांपल से बताएंगे? इसमें सस्पिशन प्रोफाइल कोर्स के मेरे को मेंशन करना पड़ेगा. FTO ना. एग्जांपल आई मीन फॉर एग्जांपल या आई कैन से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही हो एक जगह पे, और ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा मतलब वहाँ पे और भी कोई मतलब जैसे कुछ और एक्टिविटी हो सकती है, लाइक वहाँ पे कुछ और खरीद सकते हैं. लाइक यहाँ पे पीयर पे देयर इज लाइक वहाँ पे आप डाइविंग ड्रग गियर वगैरह ट्रैफिकिंग खरीद सकते सीधा हो. पहुंच गया यार ये और तो. वहाँ पे ही अगर आप कोई इंडिविजुअल को सेल करते हुए देखते हो या फिर अगर नहीं देख पाते और आपके पास एक बिलीव है कि यहाँ पे हो सकती है ड्रग सेलिंग, तो कहाँ से आंसर देना आई होता मीन है? इफ यू स्ट्रांगली बिलीव इन दैट हैंडबुक मिलती है निमेश इंटरव्यू से 4-5 दिन पहले. if you You just have to spend 15 to 20 belief minutes है कि हो सकता है, that is on the handbook. suspicion, I believe. Plus, if you're inspired to do a cop RP, sir, you should at what is least traffic watch stop? cop RP for at least 2 to 3 days. Traffic At stop, if you least. stop Those are an the- individual who is driving a car, like if you see him breaking the traffic lights or something, then you perform a traffic stop on a car or individual. Sir, I would like to give you a situation. Yeah. There is a hostage situation on going to lock the door. the Maze Bank Arena. ठीक है. And मतलब 10 officers are requested immediately to get loaded. जिम एक लॉबी में होगा बंदा. Respond जो there. पंडित करके उसको. So what will be the and just you just came on duty. You have nothing. I mean, अच्छा ठीक you're है. just basically naked. Hmm. You have nothing in your pockets. So what will be your loadout? What is I an mean the things अरे हम which तो I should साइफर carry. जिमी निको को देख रहे हैं बहुत yeah, दिनों what से. is an off मतलब हाँ तो कॉप आरपी देखो. First of उनका all, वो I मत should देखो जो have वो मस्ती my करते हैं. ID card, क्योंकि the कॉप आरपी में आने के लिए police कॉप आरपी officer's देखना badge, पड़ेगा. a taser, and then ये I believe ठीक a है भाई. pistol and a body cam. भाई बुरा मत मानना बट मुझे टॉयलेट छूते लगता है.
पहले चूतिया है, ठीक है, लगता क्या है? Okay. And what is the primary weapon of an Uh, officer? Primary weapon of officer is his voice. I mean, the उसकी आवाज़ ही मेन प्राइमरी वेपन होनी चाहिए, क्योंकि आई मीन कोई सिचुएशन को रोकने से, आई मीन इफ़ ही कैन वॉर्न और उस चीज़ को अपने आवाज़ से ही वो रोक सकता है, तो फिर बिना किसी वेपन के यूज़ के वो चीज़ ज़्यादा बात बेटर तो होती सही है. है, बात तो सही लड़के की यार. Okay, sir. Can you tell me the 5 level of forces? Sorry sir, I can't You answer don't know. that. Okay, okay, okay. Alright, one last question on this segment and then we'll move on. Right, Yes. it's a situation-based question, right? Hmm. Let's just assume that all 4 officers here, ठीक है, और हम चारों की आपस में लड़ाई हो जाती है, Hmm. ठीक है, रिगार्डिंग आपको लेके कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है या इसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और आप यहीं खड़े हो और लेट्स से आप देखते हो कि हम एक दूसरे को मार रहे हैं, देन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि बाहर तक आवाज आ रही है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं. अभी आप एक लियो नहीं है, ठीक है, Alright. बट आप एक एस्पिरेंट है, लियो एस्पिरेंट है, तो एज पर यू व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन हियर? आई मीन मैं वो चीज़ सुन पा रहा हूँ कि मतलब आप वो लोग हम्म. बात कर रहे हैं मेरे बारे में. बात नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अच्छा. बेटा निकाल के मार रहे हैं Alright. किसी पे. हाँ हाँ. और मैं अभी तक लियो नहीं हूँ. आई मीन आई एम नहीं. जस्ट अ कैंडिडेट. यस. तो I mean, I can't actually take some action on behalf of क्या आप कर रहे हो आपस में, but I mean for like if you are hurting each other और मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब कुछ हो सकता है casualties, I may report it to the LSPD और कोई और ऑफिसर अगर हो तो मैं उनको बोलूँ कि मतलब they can harm मतलब each other ऐसा करके. ठीक है. ऑलराइट, Yeah. we'll move on to the next segment. All right. Costa, do you want to start? पूछो आप सिचुएशन पूछो, एक और पूछ लो. I ask afterwards. Okay, sir. Sir, tell me what is Miranda rights? Do you So know what is Miranda? yeah sir, I know. Tell me. So Miranda rights, गाइस तुम लोग की आवाज आ रही है इसकी? you have to say Miranda. I mean एक राइट होती है जो कि आपको किसी भी पर्सन Congo को for डिटेन 6K. करने से अरे पहले थैंक यू विलन बोलना भाई. होता है, उसकी राइट्स विलन, do you को remember सुनाना होता है, when we started ताकि this channel? बाद में कोई आप I'll पे tell you guys a story, कोई ठीक है, जो उंगली ना लोग उठा सके यहाँ कि पर हैं, जो लोग किसी नए को हैं. आपने बिना राइट सुनाए मतलब I'll डिटेन tell कर you लिया guys या a फिर story. अरेस्ट कर लिया है, वो आपके अगेंस्ट यूज ना हो जाए कभी. ठीक है. Okay. जब ये Detain या चैनल नया arrest नया आपने खुला use था ना, किया words, आपने sentence बताते ठीक में. है, Do you know तब what are the difference between detain and arrest? Yeah sir, I know. बताइए. तब Detain, I mean लाइक चैनल पे 6 arrest या is 7 like सब्सक्राइबर्स थे, आपके पास इंक्लूडिंग माय सेकंड आईडी probable एंड माय cause थर्ड है आईडी, किसी को भी माय डायरेक्टली पेरेंट्स अरेस्ट आईडी, और करने का, ये या फिर विलन आपके पास एक अरेस्ट गगन वारंट या फिर लाइट, कोई ऐसा वारंट है जो ठीक कि है, आपको और अलाउ एक दो करता हमारे है जो कि आप दोस्त थे उस टाइम डायरेक्टली पर, किसी को उस अरेस्ट टाइम कर की बात सकते हो. बता रहा हूँ. और सो डिटेन होता विलन है से कि मैं I mean, मिला, हम लोग कोई गए नेहरू आगे प्लेस, की ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आपको वी वेंट टू कैरी फॉर सम फॉरवर्ड करनी वर्क, है सेल्स ठीक में, है, तो आप उस एंड दैट टाइम वाज द किसी भी फर्स्ट टाइम दैट वी इंडिविजुअल वर को डिटेन मीटिंग. करते हो, एंड बाकी आगे की और प्रोसीजर करने के लिए. दैट्स डिटेनिंग. उस टाइम पर हमें जो भी मिल रहा था मुझे रास्ते पे, बताइए, डिटेन करते वक्त रास्ते मिरांडा पे राइट लेजिट जो सुनाते भी हैं, हमें यस मिल और रहा नो, था, वन वर्ड. हम सबको Yes. पकड़ पकड़ के यही बोल रहे थे अरेस्ट कि करते वक्त चैनल को मिरांडा राइट सब्सक्राइब कर सुनाते दो. हैं, यस वो और भी नो. इतने मतलब इतने अच्छे No. तरीके से नहीं बोल रहे थे, हम तो सीधा जाके ये Alright. बोल रहे थे कि हमारी घंटी दबा दो. पूछिए, नेक्स्ट तो क्वेश्चन वो दिन पूछिए आप. वो बड़ा सही Some दिन people था. have आई made an रियली officer लाइक द डे. hostage in front of you. 4 people, there were 4, you were 2 in riding along. So क्या करेंगे आपके what will be the SOP for you? I mean, there is only one officer with me in ride along. Yep. यार लंबा मत खींचो बाबा, लंबा I मत mean, at खींचो, that बहुत point, सारे I'll warn कैडेट्स him हैं. to not do such activity. There are 4 Or- people who have taken your Bill Gates. ride along hostage. Oh, all right. Sorry. आप क्या Thank कैसे you. प्रोसीड करोगे? थैंक यू. मेरे पास यूनिट्स की कमी है उस टाइम, तो इनका I mean, लाल I बटन can't दबा दो actually भाई. use क्या my क्या बोल रहे थे vehicles. यार हम? But as far I can do my job is like वहाँ पे मैं उसे बोल सकता हूँ कि don't do this, that you will be detained or arrested, और मतलब उस टाइम मैं कोई भी ऐसा एविडेंस
लेने की ट्राई And करूंगा कि बाद में मतलब Vijoy Thomas, मैं thank you उस so चीज much for को यूज following on करके उन Instagram. इंडिविजुअल्स को पकड़ सकता People हूँ। who आई मीन haven't की followed me on कार या नंबर Instagram, please प्लेट do. हो मैं rarely या photos अगर उनमें डालता से हूँ, किसी ने but मास्क नहीं पहना हो जब तो डालता उसका हूँ अच्छी photos एविडेंस डालता लूँ। हूँ. So Yep. Palich, follow, कर Okay. ले हमें. They're trying to leave with your ride along partner. उन्होंने उसको कफ किया, गाड़ी में रखा, and they're trying to leave after all that conversation. What Yeah, will you do? I will chase him firstly. कि You मैं have your gun out already. What will you do? John जी, I John अभी think नहीं I आएगा यार आज. can't actually try to I have a मतलब responsibility to complete यार. अगर मैं Bill उस Gates भाई. पॉइंट ऑफ टाइम में Apart गोली from चला देता हूँ entertainment. तो फिर मेरे पे Well, I know, डायरेक्ट थ्रेट है कि but I promise you, I इसमें mean आपको मजा आने they वाला do है. have lethal so I may die और वो मेरे दूसरे हॉस्टेल मतलब जो भी ऑफिसर है उसको भी हार्म पहुंचा सकते हैं Promise उस भी टाइम। तो इस मैं पे तुम आई लोग को थिंक मजा आने लीथल वाला है. चलाना प्रेफर नहीं करूँगा उस सिचुएशन में। Won't you try to pop the tire if possible? या आई मीन इफ I'll just leave पॉसिबल you. मैं उसे चेस कर रहा हूँ देन आई मे पॉप हिज Ultron Gaming, टायर्स और thanks for वार्न the हिम follow, कि bro. मत करो। दैट्स ऑल। आई मीन डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल पे गोली चलाना उस टाइम ठीक नहीं रहेगा अनिमेश क्या हुआ? क्योंकि माय क्या ऑफिसर इज पूछा इन आपने? स्टेक सॉरी, एक बार और दैट्स पूछ लो भाई. मेरा ध्यान कहीं और था. कॉपी पेस्ट कर दो दोबारा, कोई इशू नहीं. Okay. Okay, should we move on to the next, please? Okay, last situation. Let's suppose you are going for a foot chase. आप एक अरे इतना सस्पेक्ट मत को खींच फुट ब्रो. चेस दे रहे हैं, ठीक है? आपके हाथ में टेजर है, उसके हाथ में कुछ नहीं है. वो सडनली क्या करता है, आपको टैकल करता है, आपको गिरा देता है, और जितनी देर में आप खड़े होते हो वो अपनी जेब से पिस्टल निकाल लेता है. सो अभी आप खड़े होते हैं, उसके हाँ, हाथ में ये एक अच्छा लग गन रहा है है, मेरे को. वो आप पे पॉइंट करता है, और आपके पास टेजर है. आप क्या करोगे इतने में? आपका तो बैकअप आप जो है वो सिविलियन काफी के अलावा दूर है, और कौन से देखो यार उसको टाइम अनिमेश, लग जाएगा इंडियन आने में. तो आरपी इतने में आप क्या कम्युनिटी का एक करोगे? फैक्ट बताता हूँ तुम्हें. इधर यूर अ आई कॉप मीन और यूर अ मैं क्रिमिनल. ट्राई करूंगा कि ठीक है, उसको एक दो वार्निंग्स इधर और यूर दूं अ कॉप और यूर अ कि क्रिमिनल. मतलब देयर इज नो आई टेज यू और ग्रे समथिंग एरिया आई हियर डिटेन यू इन दैट इंडियन आरपी कम्युनिटी. फॉर डूइंग सच थिंग्स। और ठीक है, देयर अगर इज नथिंग वो कॉल्ड नहीं सिविलियन मानता हियर. देन आई क्योंकि कभी ping ना him कभी ऐसा होगा क्योंकि कि मेरे आप पास चोरी की बैकअप भी गाड़ी नहीं में है बैठोगे एंड ही हैज अ या गन गाड़ी चोरी एंड ऑल्सो करोगे आई एम ऑन एक डायरेक्ट जगह से थ्रेट। दूसरी जगह एंड जाने आई के लिए. थिंक भले कि आप पीजी चाबी में सर्च आने के करोगे जो बाद पहले I शुरुआत की will be trained I स्टार्टिंग में will होता be था. trained in such a way So that I can use something once you against the do individual a crime, in you a no 1v1 longer a situation. common civilian who has not Okay. done any criminal activity. I guess we should move on to codes. यस प्लीज करिए Okay. करिए. So और civilian के अंदर ही Okay, सब sir, कुछ do आता you है. have little bit knowledge about the PD codes? It's not PD code, it's 10 codes. Chomu, I Koshte. think I have some knowledge. I have studied before. Okay, so before asking, let me know why we use codes instead Animal of RP कर talking सकते हो. normally. Yes. Why we use codes on Anyway, भाई dispatch? एनिमल आरपी भी होती है, So वो भी कर codes सकते हैं. Like you choose a efficiency pet that's बढ़ाती है किसी भी animal I character, mean in and PD then department I like know a person who did आपको it शॉर्ट में किसी को and कुछ इन्फॉर्मेशन who देनी got a है really क्योंकि good you can't response. go over the radio and His name is explain Northstar. all the situations at once. So there are certain codes which help you to communicate with the other officers easily. नहीं और नहीं, मतलब आरपी देख के सिर्फ एक चीज से आसानी डर से कोई लगना चाहिए. सिचुएशन को हैंडल You will करना become like toxic, beforehand. That's all. जैसे मैं हूँ. Okay. Okay, sir, it will be a rapid fire round. आपको जल्दी जल्दी codes का आंसर देना है, ठीक Rapid है? fire round. Okay. Sir. मैं आपसे पूछूंगा. So, what is 1028? So 1028 is the आप किसी व्हीकल को चेक कर रहे हो रजिस्ट्रेशन उसका आई मीन उसके नंबर प्लेट वगैरह पे चेक कर रहे हो इट बिलोंग करता है किसी इंडिविजुअल को या फिर नहीं करता. 1067? आई डोंट नो अबाउट दैट. 1050? कोई एक्सीडेंट हो गया हो व्हीकल का या फिर मेजर एक्सीडेंट हो गया हो दैट्स 1050 आई गेस. 10-4? पूछ लो. पॉजिटिव. Okay, okay, आप पूछ 1032? लो. सॉरी 1032? कोई किसी के पास गन है if you want to give a call on radio. 1060? 1060 is this gun is stolen I guess. Okay, last two quotes from my side. Tell me what is the 1052? I don't know about that. Okay, 71B. I think कोई officer down है. Officer down I guess. Okay, thank you. Anybody has any more questions? Tell me what is the difference between code 1, code 2 and code 3?
ये कर लेगा लड़का. अच्छा. हेलो मिकी. हेलो. हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ 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 जी सर, शुरुआत से ही आवाज आ रही है, कोई दिक्कत हाँ नहीं है हाँ आवाज में. हाँ जी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड 1, कोड 2 एंड कोड 3? Code 1, I don't know, sir. I know about code 0, I guess. हाँ होते हैं ना नंबर. कोड 2 पता है ओके. आपको होता क्या है? नहीं सर. कोई बात नहीं. No problem. All right, we'll conclude the interview here. We'll discuss your feedback and we'll re-verify your form one more time and all the responses that you have submitted there. We'll discuss the feedback, share the information to the HR, and should you get selected, the HR will get back to you within the next 2 or 3 days. Sure. Okay, rate yourself on the अबे क्या रेट scale रेट of 1 करवा to रहा है? 10. ये रेटिंग का What बोला will है क्या you किसी rate ने? yourself on the behalf of this interview? Sir, I'll rate myself 9 on 10. Yes. Why 9? Why not 10? Or why not 8? I believe कुछ ऐसी चीजें थी जो I failed upon it. I mean, I have to brush up some things after this interview thing. That's all. That's why I rate myself 9 on 10. Okay, sir. Your interview ends here. Thanks for coming. Thank you. हाँ, दोनों तुम. आ जाइए सर, मैं आपको बाहर से छोड़ देता हूँ. एक सेकंड मेरी बात सुनो जरा. डिसेंट. When you say that the interview is concluded, उसके बाद कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए. उसके बाद क्यों पूछ रहे हैं? वही यार, और भाई इस वाले में 25 मिनट से 27 मिनट लग गए. क्या मैं बात वही कर तो रहे बोल हो? रहा हूँ कि मैं तब से बोल रहा हूँ खत्म करो ओ खत्म करो भाई, खत्म करो, सवाल पे सवाल. बहुत बहुत वो लंबा भी हो रहा वो है, भी बहुत रेलेवेंट लंबा भी हो नहीं रहा था है. जिसका हमको देखना मेंटल एबिलिटी वो पहले ही चेक हो चुकी थी. हाँ यार ठीक सुनो है. ना, एक काम करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं ना, अपन ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ना खुद से ही बना बना के पूछ रहे हैं, सो वो सबको बाबा मैं अवॉइड ये हाँ कह वो रहा करते हूँ उसके पर आंसर पर्सन हर हैं. किसी को वही अपना टाइम पता होना चाहिए. आई विल नॉट टेक मोर देन 3 to 4 minutes. अगर आप सब लोग यही कर एग्जैक्टली लोगे सेम. तो 12 से 18 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगा. ठीक है. भाई 15 मिनट देना है बस, उससे हर ज्यादा राउंड नहीं. एक में काम एक करते क्वेश्चन एक काम पूछ लो. करते ये 3 एक फेज वाला काम कर. छोड़ते हैं. 3 मिनट आप जो पूछना है पूछो, 3 मिनट मुझे जो पूछना है मैं पूछता हूँ, 3 मिनट हर कोई यस पूछेगा. यस, गुड आइडिया, ये गुड फेज के आइडिया. चक्कर में ना बहुत लंबा खींच रहा ठीक है. है ठीक है ठीक है ठीक है डन सी. ठीक है डन चलो सी. वो अगला बंदा ला रहा है उसके साथ भी ये करेंगे. यही फिर करते तुम हैं, हाँ, स्टार्ट करना एक एक 3 करके. मिनट, दूसरे 3 मिनट मेरे, तीसरे इसके, चौथे इनके. 12 मिनट से 15 मिनट के बीच में सब खत्म हो जाएगा. गुड आइडिया, डन गुड सी आइडिया. डन सी. है ही नहीं लगता. अच्छा है. ask him to ask him to हाँ जी wait 1 minute. ओके सर, एक ये बार वेट कर ले, एक मिनट. विल कॉल यू. तो नींद से उठ के आया है सीधा. एक मिनट. वो उसका फीडबैक से डिस्कस कर लेंगे बाद में ना. हाँ हाँ. मैं तो नोट कर ही रहा हूँ. सुनो कोस्टा, अभी हाँ देयर हाँ वुड बी नो मोर फेजेस. ठीक है, एवरीबडी विल गेट, ऑल 4 of us will get 3 minutes each. ठीक है, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू ना आधे आधे घंटे का जा रहा है. तो पहले 3 मिनट फ्यूरी के हैं, दूसरे 3 मेरे हैं, तीसरे तुम्हारे हैं, चौथे स्टीव के हैं. ठीक है, 3 मिनट से ऊपर सवाल ही नहीं पूछने. अगर आप ऐसे ही सवाल पूछे जिसमें आप उसकी मेंटल, फिजिकल और हिस्ट्री के बारे में तीनों जान जाओ 3 मिनट के अंदर. इंट्रोडक्शन के 2 मिनट दे दो उसको. 2 मिनट ठीक है, इंट्रोडक्शन. इंट्रो के 2 मिनट लेगा तो 12, 2, 14 हुए, और उसके बाद आंसर देने में 1 मिनट लगाएगा. 12 से 18 मिनट में इंटरव्यू खत्म. डन सी. ठीक है, ठीक है. चलो बुला वो लो. थोड़ा गुड डिपेंड आइडिया, भी गुड करता है आइडिया. ना कि कैंडिडेट लाइक कितना टाइम लेता है पर क्वेश्चन को. लाइक हाँ अपने तो 1 या 20 2 लग क्वेश्चन जाएंगे, 22 लग फटाफट जाएंगे. फटाफट. 1 मिनट में बोलेंगे. 1 मिनट में एक्सप्लेन योरसेल्फ. मतलब तेरे से ऑडियो हाँ. से 2 मिनट तो ले ही लेगा. बुलाओ 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 सुनो. ठीक है ठीक बुलाओ बुलाओ बुलाओ. 3 मिनट वाला आइडिया सही है. चलो, है ना, वो सही था ना यार, क्योंकि ऐसे तो दिन गुड लग आइडिया, जाएगा. गुड आइडिया. Good evening, everyone. कैन यू Good गो evening, sir. a Yes, little sir. loud? I'm not able to see the person standing right here. Like, Can you hear some him issues. guys? Yuri, can you hear him? हाँ I can. Can you be a थोड़ा little आगे और आ louder, जाओ, sir? थोड़ा और आगे आ जाओ. Like, हाँ जी, वैसा खड़े रहो बस. हाँ जी sir. You'll get 1 minute to introduce yourself and tell us about your personality. all right, my name is Wazir. Just गाइस हम लोग को सुनाई दे रहा है hello, क्या can you बोल hear me? रहे हैं? Yes, we हाँ जी can. सर, We can. पूरा आवाज आ रहा है. All right, my name is Wazir and I'm from India. I'm born here, but when I was 4, I was
sent back to India due to some reasons. And now after 30 years, I am back to the city. Tell us about your personality. My personality is a bit of a calm and thoughtful. Like I think before doing. Okay. Could you be a little louder if you can? How about now? थोड़ा मतलब ऐसा loud and clear. Hello, can you hear me now? हाँ ये हुआ ना loud ये much हुआ. better. Okay. Okay, so let me tell you about the interview process. This interview needs to be concluded in maximum 20 minutes, right? We all four will be asking you multiple questions. That would include SOP-based questions. That would also include situation-based questions. Will include 10 codes and some questions about your personal life as well, so that we get to know more about you. Okay. You will have 1 to 2 minutes to answer all the questions, right? At any given point of time, you do not know the answer. Simply tell us that you do not know, right? So that we can move on to the next question. All right. All right. So, Fury, start. Okay, sir. Do you have any past experience of LU duty? I have worked with a security firm in India for a couple of months. I know अपना बंदा है क्या करें? Okay. Have to be fair with everybody, ना? So, what was the responsibility over there? Your responsibility over there? To guard a jewelry store. Okay. So, do you have any कौन सी idea family about से हो? LU duty here in Los Santos? Have you seen any officer? I have seen, but I don't know it like personally. यार या तो मेरे headphones फुद्दू हैं. What are the 3 departments of PD here in Los Santos? SASP, BCSO, and third one, I'm not aware of, I guess. What's the full form of SASP? अबे उसका second character है. India State Police. What do you know about the SOPs of an LU? SOP, like what is SOP or like SOPs, like the internal definition and what is their function? What are they used for? The definition is that thing, standard procedure of operating. Why are they so And useful? these are useful because to keep like everything in discipline, and people know how to enact or react in a certain PD situation. gang on top. I know, right? So it doesn't create mess for like a team. Okay. So you're right now. You are a We lost you, Fury. officer and try to take him hostage. What Okay. will be your steps? What will be यार your मुझे सुनाई क्यों approach? नहीं दे रहा? What's wrong with me? As like I will try to defuse Battery the situation 20%. by talking, and obviously like if they are more aggressive and all, I will simply like try to calm them down and ask the situation why he's taking him hostage. And to be honest, I believe dead PD officer is no use. So if I get out from there, I might have a chance to retrieve my officer and apprehend those criminals. So I will try भीम सिंह to गुजर अरे डेढ़ा भाई ने भी फॉर्म भरा है. stay put and Save yourself first. wait for yep. No, Okay. not saving, but save in the sense so I can save my senior officer, handling the situation. So they have already taken your senior officer now. This time, उन्होंने hostage बना लिया. You are pointing a gun at them. They are pointing a gun at your officer, and they are trying to take him away. They are trying to flee with him. What will be your approach? If I am अरे रुक जाओ, उससे pointing खत्म तो करने gun, दो यार. then I might have access, to my radio. So I will give a backup call and try to buy time so that my officers get there and try to save him. Okay. You don't have any past experience, right? No, not in the police department. Do you have any knowledge of traffic stops? Traffic stop basic, yes. यार Basic. इसका Discord ID क्या है इस बंदे Okay. का? How are they different than felony stops? Felony stop is basically
when the vehicle is suspicious for committing a crime and taking off, and traffic stop is like generally skipping traffic rules. Okay. Slade, I think you can take over. Yeah, for some reason, I'm unable to hear you guys. Either you guys are speaking very softly or something wrong with me. नहीं, we are speaking fine. I think Steve sir सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सही से सुनाई दे रहा है. हाँ तो Okay, never mind. Can you tell me your name one more time? Wazir Zardari. Wazir. Yes. Okay. I'll ask you a couple of questions. If you do not know the answer, simply tell me that you do not. Okay. What's your age, Wazir? 34. 34. And you said you were doing a guard job of a jewelry store, right? Yes. How long have you been working there? 2 months. What all type of customers that you have observed there? To be honest, those 2 months I did not observe anything suspicious. It was pretty good. All went smoothly. Any mishappening happened while you were serving as a guard there? No. Good. Okay. Do you know what is a 1099 call? I have very less information about 10 codes. Have you studied the run book? No. Okay. What are the two qualities that you possess that can get you into the department? That you Okay, think are very distinct? First, I think I am very calm. Hmm. And I can handle situations which are, getting heated up, and I can sort it out. Possibly sort it out, not every time, but yes, I can try my best. And the other one is I am very much aware of human behavior. Okay. But do you know what is a Miranda right? Yep. Miranda rights are basically rights for a detainee or someone who is accused of something, and he can defend himself in court of law. Okay, what And if he that applies to every doesn't individual. understand the law? If he doesn't understand the law, doesn't matter, but law understands him, no? Like he's a civilian No, here, but let's and say you said he can defend himself in the court, but what if he's not able to? a lawyer would stand in his place and do the talking. What if he cannot afford one? It will be provided by this government. Provided by us. Okay. What do you think is more important, saving a civilian's life or saving my colleague's life who's getting passed out just because he didn't eat anything from the last 1 hour? Civilians. Like. Okay. Let's just suppose that you got a call on radio or dispatch. Okay. That one officer is down at, let's say, LSIA. Okay. Okay. And then you receive another call on the dispatch that somebody is threatening a mayor. Where would you respond first? I would respond for the mayor first as an LE officer. Like the moment we get the badge, it's our life on stake always. So I think the LE officer is mature enough. He knows what he's doing, and mayor is chosen by people, and people are the most important thing. Okay. My last question to you: who do you think is the highest law enforcement officer in the city amongst these three? A BCSO major, an LSPD lieutenant, or a DA? LE officer. Who? Sorry? You're talking about LE officers, right? Yes. I'm talking about who's the most or the highest law enforcement officer amongst these three. A BCSO major, an LSPD lieutenant, or a DA? I'm not sure about the answer, but I will get a guess. That's the DA. DA. Yeah. Okay, why do you take this chance and say DA? Just a wild guess. No, Just a wild like guess.
Yeah. All right, thanks, man. That's all from my side. Okay. Sure, I'll ask. Let's D is suppose the you're right on answer, duty let's say. and you're the only officer on duty. You get a dispatch call that there is drug sales going on at Vinewood. Okay, and you Come respond again. there. Sorry, I didn't hear you properly. Okay, I'll repeat my question. You're the only officer on duty. You get a dispatch call on radio that there is drug sales going on at Vinewood Boulevard. You respond there and you see a civilian wearing black mask, black hoodie with black jeans, and he's exchanging some stuff with persons present or locals present at Vinewood. Okay. When you stop by there and ask what are you doing, he says, officer, I'm doing nothing, I'm just exchanging some expensive chocolates. और फिर तुम उसको कहते हो कि can I search you? Then he gives you the consent of search. You search him, you found nothing in his pocket, which is illegal. How will you proceed that time? If I don't found anything on him, like no evidence, then I guess I will start searching for someone else who could be possibly doing the same thing or could have selling drugs there. There is no one else present at the moment. I think if there's no evidence, I don't think I have anything on him. All right. So my next situational based question is, let's Wilgex, I suppose cannot reveal. Sorry. we three are riding along, you, me, and Officer Slade will I'll be see. honest to At this Legion Square job. traffic बहुत भरोसा light, करके दिया we है मुझे. stop by So I cannot and reveal. किसी चीज पे ये मेरी announcement और can only be Officer made Slade by Wilson Rana की Pratap बहस हो or जाती anybody है, in high command. जिसमें मैं इन्हें गाली देता हूँ. ये गाड़ी से उतर के मेरे को मुक्का मारते हैं और इससे मुझे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए मैं इन्हें But as you saw, बेटन से सर पे मैंने मारता हूँ, कोई भी जिससे अपने ये साइड से नॉकडाउन कमी नहीं हो छोड़ी. जाते I हैं. asked him differently. लीजन स्क्वायर पे I asked him काफी a सारे question that सिविलियंस nobody खड़े would know होते in हैं this room एंड only. ऑल्सो मेरे ख्याल से वहां पर फ्यूरी न्यूज को पता होगा रिपोर्टर्स शायद. होते हैं. न्यूज ठीक है, but I रिपोर्टर्स don't think अपने so anybody कैमरा else would know निकाल this कर वहां answer. पर एट दैट मोमेंट रिपोर्टिंग चालू कर देते हैं. सिविलियंस काफी ज्यादा बेकाबू मैं तो होने इसका लगते अच्छा हैं और लगा वो औरों घेरा से. बना हाँ, के देखते सब हैं ठीक है. कि क्या हो चल रहा है. अरे राइट. हमने थोड़ा फॉर्मेट सो चेंज किया ना. व्हाट विल यू डू एट दैट मोमेंट? Okay, at that moment, I will try to get you both in the car and get out of the situation instead of answering media and answering the civilians over there. I think the person who has passed out need to get hospital, and the other thing, the person who has beaten him, that's you. So you need to be taken to police station to seniors for mobbing in that like public area. I am a command. I can easily get you fired for that. So whom will you reach so that you can resolve this? The person who is above you. I am a sergeant. Who will be above me? Corporal. ठीक. All right. Let me get the other question. Achha, one word question. Will you be reading Miranda rights when you detain a person? Yes or no? Yes. Will you be reading Miranda rights when you arrest a person? Yes or no? Yes. Okay. Can you tell me what is chain of command? A chain of command is like the person who we follow the orders. ऊपर होगा ना मतलब? Like the officer above me, he gives me order, I follow. Lieutenant. Like, सुन ही नहीं रहा and question I guys. do like if I have any problem, I नहीं go to corporal that नहीं होता. officer, not the Sergeant officer के ऊपर above him, major होता है. so that BCSO में the things sergeant can be की जगह major. convenient and in chain. Sergeant के ऊपर major Right. होता है. Steve sir, if you don't mind, I just have one more question. जी बोलिए बोलिए. Regarding this only. So basically, Steve sir is a sergeant. ठीक है, he is 4 rank above me. He gives you a command कि आप जाओ टाहो यूनिट निकाल के लाओ, ठीक है, and you are riding along with me, and I tell you कि नहीं जाओ चार्जर क्राउन विक निकाल के लाओ, टाहो यूनिट नहीं लेके जानी हमें. Okay.
what will you do? जो लाइक आपसे ऊपर है उनकी बात मानूंगा, बिकॉज टेक्निकली वो ऑर्डर अगर मेरे पास आया है तो वो आप पे भी अप्लाई करेगा, बिकॉज ही योर सीनियर एज वेल. ठीक है, सीसर जा रहा. हाँ जी. So my last question, let's suppose कि आप, मैं और स्लेड विल्सन ऑन ड्यूटी हैं. सिर्फ 3 ही ऑफिसर ऑन ड्यूटी है. एक बैंक रॉबरी होता है, हम तीनों वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं. ऑफिसर स्लेड विल्सन बनते हैं हॉस्टेज टेकिंग ऑफिसर. ठीक है, वो हॉस्टेज लेते हैं एंड हम दोनों चेस पे जाते हैं. जो सस्पेक्ट्स होते हैं सिर्फ दो ही मतलब दो ही रॉबर्स होते हैं. वो अपने कार में बैठते हैं, उनके पास एक इमॉर्गन होती है. इमॉर्गन लेकर वो जाते हैं पलीटो के पास होता अरे है एक यार, चिकन फैक्ट्री. वो घुसते हैं चिकन फैक्ट्री के अंदर और हम लोग भी उनके पीछे पीछे जा ही रहे होते हैं कि हमें अंदर से गन शॉट के साउंड्स आते हैं. अंदर से सिर्फ पिस्तौल ही नहीं, एआर के भी चलने की आवाज आती है. ठीक है, ऑटोमेटिक वेपन भी फायर होते हैं. सो बाहर खड़े होकर आपके जेब में सिर्फ और सिर्फ एक पिस्तौल है, एक टेजर है. ठीक है, एंड बॉडी आर्मर राइफैक्स है. मेरे पास एजॉल्ट राइफल है, मेरे पास पिस्तौल है एंड मेरे पास टेजर है. मॉर्गन आई नहीं. अरे कमांड तो ये यू, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है बिंग यार. योर सीनियर ऑफिसर, हाइपोथेटिकल. कि आप अंदर जाइए एंड जितने भी रॉबर्स हैं, सस्पेक्ट्स हैं, सबको डाउन कर दीजिए अपने पिस्तौल के साथ अकेले. व्हाट विल यू डू? ये तो इसने सर्वर का सवाल I पूछ लिया. think that is humanly impossible, and since it's your command, I mean that's a tricky question. बट स्लेड सर भी तब तक लाइक उनके बैकअप का वेट कर सकते हैं माने का. तो यू नो वी कैन ऑल गो टुगेदर. आई कैन सजेस्ट. No, I'm not there. You're all alone. ओके, सो आई विल आस्क यू लाइक maybe suggest you to come with me, or else you know do not go inside because we don't know वहाँ पे कितने लोग हैं क्या हैं. like it's not only दो हमने जाते हुए देखे अंदर, but अंदर कौन कौन है we don't know, so it will be a suicide. चुतिया होगा जो ऐसा बोलेगा. Right. Thanks. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Okay, I'll be asking the questions. So first of all, will be the situational based. एग्जाम्पल, आप एक फुट चेस पे हो, एक सस्पेक्ट को आप फुट चेस कर रहे हो. ठीक है, आपके हाथ में एक ये टेजर है, क्या उस कैरेक्टर सस्पेक्ट के बनाया है हाथ में इसने, कुछ भी नहीं काजल है. वाला बच्चे की आप उसको शक्ल. चेस कर रहे हो. इन द मीन टाइम वो क्या करता है, आपको टैकल करता है एंड जितनी देर में आप खड़े होते हो वो अपनी जेब से पिस्टल निकाल लेता है. ठीक है, बच्चे की शक्ल. अभी क्या आपके कैरेक्टर हाथ बना में कर आ गया टेजर है ये. ना, उसका हाथ में पिस्टल है. वजीर नाम है इसका. आपका जो बैकअप है वो थोड़ा दूर है, उसको आने में टाइम लगेगा. सो इन द मस्त मीन लग टाइम रहा है. आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? He has his gun pointed on me that यप और यप अगर मैं उसके सामने टेजर अगर मैं उसको पॉइंट करता हूँ that will be ridiculous because he can shoot me anytime while my arm goes from down to above, so I will just put my hands up and wait for my backup to come. Okay, so do you know about the 10 codes, PD 10 codes? A few, yes, not all. Okay, so first of all tell me what is the use of 10 codes? 10 Why codes we is not use basically normally conversation rather than using 10 codes? What's the use? first it is convenient, second हो सकता है कि सामने वालों को समझ में ना आए, उस चीज़ के लिए भी हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रिक्वेस्टिंग अ बैकअप इन अ सिचुएशन जिसमें लाइक सामने अगर मेरे कोई खड़ा है उसको बैकअप को सुनता है तो ही कैन गो वायलेंट, बट उसको अगर मैं कोड में बताता हूँ तो मे बी उसको समझ ना आए, तो इट कैन बी यूज बोथ वेज. आओ विलगैक्स फॉर्म भरो, अगली बार बट तुम भी यहाँ आओ. तो आधे से ज्यादा सिविलियंस को पता है 10 कोड्स. दे आर वेरी नॉलेजेबल, वेरी वाइज. सो उस सिचुएशन में यही है कि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यूज कर सकते हैं कोड्स. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक. Okay, so you have to answer it very quickly. It will be a rapid fire round. आपको अगर पता है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज आप कह दीजिए कि नहीं पता. ठीक है, so what is 1072? नो आइडिया. 1090? नो. 1067? नो. 1041? I guess I know this one. I guess it's beginning of duty, I guess. 1028? Like coming on duty.
Okay, 1028, Vehicle license plate check. 1032, It's backup. 1038, 1038, nope. Suspicious sign 10-7, off. 10-7, nope. 1091, Negative. Like I don't know. 1071, I guess वही तो आपने पूछा अभी 1071. 91 पूछा था अभी. Oh, my bad, my bad. 71, 71 is, I think, calling like my superior to a situation. Officer down. 1013, 1013, nope. Gunshot. 1014, 1014 is, I guess, shots fired. Okay, so your code session is completed. So I'll be asking in a priority call. ठीक है, मैं आपको 5 सिचुएशन बताता हूँ, आप बताओ आप पहले अकॉर्डिंगली किस किस में रिस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है, Okay. सबसे पहले एक है रॉबरी हो रहा है एक जगह पे. ठीक है, एक Okay. जगह पे हो रहा है ड्रग सेल्स. एक ठीक है. जगह आपका ईएमएस डाउन है, हम्म, एक ऑफिसर डाउन है. Okay. चार मतलब ये केस दोनों में, एक ही सिचुएशन में EMS और ये ऑफिसर. चारों अलग अलग सिचुएशन है. आपको बताना है Okay. पहले किस में जाएंगे फिर किस में जाएंगे, ऐसे चार में बताओ आप. पहले मैं EMS वाले को बचाऊंगा, then PD, then drug cell, and then robbery. ऐसा क्यों? EMS is like basically people who saves other. So I think PD ऑफिसर से ज़्यादा उसको पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ऑफिसर्स को मैंने अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया कि when they take the oath they know what they getting into. सेकंड मैं ऑफिसर को बचाऊंगा क्योंकि ड्रग सेल्स एंड हाउस रॉबरी से ज़्यादा अपना किसी की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड देन मैं ड्रग सेल्स के लिए जाऊंगा बिकॉज ड्रग सेल्स इज बेसिकली समथिंग harming people, and robbery at the last, I guess. Officer EMS That's my robbery hunch. box है. ओके, दिस इज फ्रॉम माय साइड. आप में अफसर को किसी और को पूछना है तो आप पूछ लीजिए. नहीं, I think नहीं we're done. पूछना जी, डन है. ठीक है, so Wazir, we conclude your interview here. ठीक है, we'll share Okay. your feedback with the HR, and should you get Okay. selected, the HR will get in touch with you with the next 2 things. All right. Okay, sir, rate yourself from 0 to 10 based upon this interview. Costa. Other than 10 codes, I think from my side I have given my 100%, so basic 9.5. Okay, why 9.5? Why not 10 or like 7 or 8? I think काफ़ी situations and answers मैंने अच्छे से दिए हैं, and the thing I lack is the experience in LEO thing, the law enforcement. तो उसी वजह से 10 codes भी नहीं पता थे मुझे most of them. तो हाँ, experience के लिए मैं थोड़ा सा वो कर सकता हूँ, लेकिन I can overcome things very quickly. Okay, sir, this is the end of your interview. Thanks for coming. All right. If you get selected, we will get in touch with you soon. All right. Thank Fury, you. आप इन्हें please escort कर दिया. I am 10 Yeah. second. एक मिनट. हेलो सर. Costa, जब मैं बोल देता हूँ ना कि conclude हो गया, उससे पहले ही पूछ लो. ये वाला ठीक है. हाँ, क्योंकि वो बोलना कि रेटिंग HR वाला. कनेक्ट करेगा, उसके बाद अगर कोई पूछे तो फिर वो रिलेवेंट सा हो जाता है. ओके ओके ओके, पहले पूछ लेंगे वो. जी जी. है ना? See, we wrapped this interview in like what, 19 minutes. 19 minutes या 90 to 20 minutes. देखा, जल्दी हो और गया. इससे पहले वाले we saved almost 8 to 9 minutes. सही है, सही है. ये मेरे को डिसेंट लगा थोड़ा. Decent as in बस attitude, I liked his attitude. ठीक है. एटीट्यूड अच्छा है. Situational ठीक है. awareness है, 10 codes के बारे में हाँ. knowledge बहुत कम है. उसके बाद says, रुक जाइए give us 1 बाहर. minute. ठीक है, एटीट्यूड अच्छा है, SOP के बारे में ओके पता है, लेकिन प्रायोरिटी कॉल्स नहीं पता. ठीक है, 10 कोड्स भी नहीं पता, which means is a completely fresher. A lot of work would be needed, but I think a chance may or may not be taken. वो बाद में डिस्कस करते हैं. वो देखा जाएगा. जी. कोस्टा अपना फीडबैक डाल दो आप. फ्यूरी, आप अगर हाँ. आपको लगता है कोस्टा फीडबैक ऊपर नीचे है
तो आप अपना पोस्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके डाल दो वहाँ पे, मैं अपडेट कर दूंगा। मैं डाल रहा हूँ ठीक डाल दिया? नेम स्पेलिंग सर्च कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है ठीक है। आइए प्लीज कहाँ पे अपडेट करो? शीट पे अपडेट करो ना आप लोग? नहीं मैं तो F2 जनरल में अभी डाल अभी रहा हूँ, उस पे कर रहे हैं, फिर मैं शीट पे अपडेट कर दूंगा। मैं end में। जनरल में डाल रहा हूँ। ठीक है। सर लॉक दे लॉक कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं। और कितने बचे हैं वैसे नीचे? 2 और गुड बचे हैं। आफ्टरनून सर। गुड Okay, good आफ्टरनून। afternoon. Could you be a little louder? एक Come a सर little अब सही close and है? be a little louder. हेलो सर अब सही है? हाँ जी Perfect. सही हाँ है। ठीक है। Okay. Tell me your name and your ID card first. सर माय नेम इज जॉन स्पार्टन एंड हियर्स माय आईडी कार्ड। Patan. अरे, All right, John, could you introduce yourself? Before that, Steve sir, John, 1 second. जी John will be asking you a series of questions, all 4 officers here. Right? You'll get to answer all the lengthy questions, maximum 2 minutes. Right? If you do not know the answer of that question, simply tell us that you do not know so that we can ask you different question. Okay? यस सर। And the interview will be a little difficult considering that we need resources who are not just physically strong but mentally strong as well. ओके सर। Okay, so please proceed with your introduction first. 1 minute. सर माय नेम इज जॉन स्पार्टन एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कैलिफोर्निया। सर मेरे को वैसे सही बताऊं तो मेरे को पुलिस में स्टार्टिंग से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मेरे फादर थे पुलिस, यही एक डिटेक्टिव थे वो। ये क्या ना, मेरे को एक तो इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि मैं उनकी जब भी जॉब देखता था मेरे को बड़ी ज़्यादा रिस्की लगती थी उनकी। मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी कि कभी उनको कुछ हो ना जाए। तो सिर्फ मैं किस वजह से आया वो ये था कि ऐसी जो मेरा फिक्र था अपने फादर के बारे में वो एक दिन ट्रू हो गया। वो अपने पार्टनर के साथ story अपनी time, ड्यूटी boy, कर रहे story थे। time. उसी वक्त कोई एक बैंक रॉबरी हुई, उसमें वो रिस्पॉन्ड करे अपने पार्टनर के साथ और वहाँ पे 3 वो more एक likes शूट आउट में for कन्वर्ट हुई 100. और वो उसमें मारे गए थे। और वो जो जो रॉबर से वो कभी पकड़े भी नहीं गए। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि उन लोगों को पकड़े भी नहीं गए। बहुत टाइम तक वो केस वेस भी चला था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन वो तब भी पकड़े नहीं गए थे। जो उनके जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे। तो मेरी देख रेख उन्हीं ने ही करी थी और उन्हीं ने फिर मेरे को समझाया कि अगर तुम्हें कुछ करना है इसके बारे में और ऐसे तो फिर तुम भी आ सकते हो। तो उन्होंने मेरी फुल ट्रेनिंग करवाई थी, जो भी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ उन्हीं ने करवाई। और फिर उसके बाद उन वहाँ पे जब मैं गया था तो फिर मेरे को ये था कि सीनियर्स ने मेरे को ये बोला था कि ये जो केस जो क्लोज हो चुका है उसके बारे में मेरे को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है आगे। और ये मेरे ऑर्डर्स थे लेकिन तब भी मेरा ये पर्सनल था तो फिर मैं तब भी उसमें इन्वेस्टिगेट करता गया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से मेरे को उन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। Okay, that's So is saddening that news. But मेरे को एक बात बताओ यार, John, right? Tell me Yes. one difference between a Leo and a vigilante. सर लियो एक वही है कि लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर होता है और सर एक विजिलेंटी वो होता है कि लियो एक तो वो भी है कि वो अपने दायरे में रह के काम करता है और विजिलेंटी वो है कि उसके ज़्यादा कोई दायरे नहीं होते, उसको जो सही लगता है वो करता है। So, with this answer of yours, tell me what you did makes you a vigilante or a Leo? So I think at that point of time I act as a vigilante that I shouldn't and I've understood my mistake. So why do you think that you should get a second chance? सर जैसा आपने बताया कि आपको मेंटली स्ट्रांग बंदे भी चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग भी, तो आई थिंक आई एम आल्सो मेंटली स्ट्रांग आल्सो and I acted because it was my father, but now I'm a little, you know. Who else is there in your family? Sir, I have no one except that our family friend who was that partner Do of you my have any father. friends? Sir, a bit that were in California but not here. Let's say your Californian friend comes to Los Santos and
आप एक लियो हैं यहाँ पर, Yes. ठीक है, you do not know what your friend's day-to-day activities are, ठीक है, but let's just say that Officer Fury here is patrolling one fine day and he finds your friend to be dealing in drugs, ठीक है, at Vinewood. वो उसे Yes. अरेस्ट करने की जगह उसे डिटेन करके माउंट चिलियार्ड पे लेके जाते हैं You were on the radio? और सारी जानकारी निकालने के लिए उसे 3rd डिग्री टॉर्चर करके जवाब निकालते हैं. Somehow you got to know this information. How would you proceed from there? सर मैं पहले तो इस पे एक्ट नहीं करूँगा कि वो मेरा दोस्त है कि नहीं. What's wrong is wrong. जो इनने किया वो गलत था. उनको डिटेन करके पीडी लाके ही इंटरोगेट करना चाहिए था. मैंने टोटल ऑफ 2 तो लिए हैं. अगर मेरे को जैसे ही पता लगता है मैं इमीडिएटली अपने सीनियर से बात करूंगा और इनसे बात करूंगा कि इनने ऐसा क्यों किया था. ठीक है, मैं ये चीज मतलब अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करूँ. क्या है बात तो कर रहा है रेडियो पे. Okay, let's just suppose कि फ्यूरी की जो रैंक है उस पर is a corporal. एंड वन मोर थिंग, Who would you report this information to? बीसीएसओ And you're a Sir, officer. 12 लेके रोको, 12 तक खींचो, ठीक है. I am an officer and he is a corporal. Yes. एंड हम Hello. 13 Sir, लेके रोक 13 के बाद I'll report it to the next that next senior officer, that is Sergeant. हाँ लॉबी पे. Okay. Do you know what are 10 codes? Pardon, sir? Do you know what are 10 codes? Yes, sir. Nice. Do you know where are you standing? Sir, where stand? Yeah, where are you standing right now? जितना भी कैडेट्स आएंगे आप Sir, I'm standing in BCSO. यहाँ ऑलरेडी 11 What is BCSO? सब Sir, it check is. It stands for Blaine County Sheriff Office. कर. Okay. What is the difference between lobby Blaine na? County Sheriff Office and Mission Row Police Department? पीडी का पूछ रहा ना तो Sir, LSPD का. Why Sir, are we don't called know. sheriffs? 10 Sir, ट्वीट करके बुला ले. क्यों करूँगा? There are interviews. sir, I don't know that. Okay, no problem. Tell me what is a 1076? 1076. Mm-hmm. Sir, 1076 is I am en route Okay. and that I'm coming there. Okay. If I give a call on the radio that I'm 10744, what does that mean? 10744. 44. The 1044. Yeah. The 1044. Sir, I don't know that. All right. One last question from my end. Let's just suppose myself and Officer Steve here, we are doing a code 1 patrolling at Palito, right? And we see a group of people, more than 7 to 8, doing illegal weed farming, right? And you just came on duty, okay? And let's just assume that you hold a higher position than both of us, okay? We both gave a call on dispatch that dispatch, we are requesting for backup. Okay. And this is the situation. What would you recommend to us? We are just 3 on duty. So just we 3 are on duty and there are 7 to 8 people. Yes. Sir, I'll recommend that they'll stay as far away as possible and take What do you want to tell me? evidences like their car or their face, clothes, that all, and where they are doing that stuff. And जब भी और ज़्यादा ऑफिसर्स हुए तब हम वहाँ पे जाके उनसे पूछे अगर वो वहीं पे रहे, वरना कभी ना कभी वो उधर आएंगे. तब तक के लिए वेट करेंगे जब तक हमारे पास और ना हो, तब तक सिर्फ एविडेंसेस ही. Hello. Slade. Okay, I would like to continue. So, do you have, first of all, do you have experience, previous experience, past experience, or are you fresh? Sir, I have a very little experience. As I said. So you are aware of SOPs, right? Yes, a little. What are SOPs? Sir, it stands for Standard Operating Procedure. And why are they useful for an LU? Sir, वो बताता है कि एक LU को किस तरीके से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए बिना किसी रूल तोड़े. बस रूल का ही, सिर्फ रूल का ही लेना, मतलब
Is it just for the rules, just to abide by the rules, or something else? सर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, तो फिर वही कि उसको किस तरीके से कोई भी सिचुएशन हैंडल करनी है, क्या करना है भाई. In what situation will you go out of SOP and perform some activity? सर Give me an example. I can't think of one where I will break Okay. the SOP. Probable cause and reasonable suspicion. What are the differences? सर प्रोबेबल कॉजेज कि मेरे पास एक लॉजिकल बिलीफ है जो कि मेरे एक सपोर्ट करते हैं एविडेंस के द्वारा कि कोई क्राइम हो चुका है या फिर होने वाला है, जो कि मेरे को अलाउ करता है कि मैं किसी को भी अरेस्ट करूं या फिर उसके लिए वारंट निकाल सकता हूं. और रीजनेबल सस्पिशन होता है कि मेरे पास एक कोई रीजनेबल बिलीफ है कि क्राइम हो सकता है या फिर मतलब हो चुका है, जिस और उस एरिया में जैसे और भी लोग हैं तो मैं उनको वो कर सकता हूँ, इंटरोगेट कर सकता हूँ. अभी पीडी में कितने लोग हैं? अराउंड 60 लोग हैं. दोनों का एक एग्जांपल. 100 के आसपास सर करने की उम्मीद रीजनेबल है. सस्पिशन का तो एग्जांपल ये बट होता कि क्या है ना, जैसे बीस की हर वक्त एक कहीं अवेलेबल नहीं बैंक होता, रॉबरी या कुछ हुई है तो इट्स लाइक और हम 24 लोग घंटे रिस्पॉन्ड अवेलेबल रह करें जाएगी पीडी, फिर थोड़ा सही और रहेगा. वहाँ क्योंकि पे कुछ लोग हम देखते जो हैं है कि वो 4 सुबह या 4 5 बजे लोग तक खड़े खेलते हुए हैं, हैं कुछ लोग वहीं पे 5 उसी 6 बजे तक लोकेशन खेलते पे, हैं. तो उन लोगों को अंदर कोई नहीं है लेकिन वो कंपटीशन नहीं मिलता, इधर उनके उधर लिए कोई यहीं पे फंड घूम बचता रहे हैं, नहीं तो है. फिर उसके जस्ट बगल तो में तो आई फिर होप हम उसको नाउ दैट वी आर इंटरोगेट तो कर हायरिंग, सकते हैं कि वो यहाँ पे ऐसे पे क्या And कर रहे थे. this comes under what? रीजनेबल हाँ रीजनेबल सस्पेक्ट. Probable cause. प्रोबेबल कॉज जैसे कि एक जैसे ड्रग सेल हो रही थी कहीं पे, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि एक या दो बंदे वहीं पे खड़े होके मेरे सामने सामने बेच रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें और मेरे पे उसके लिए एविडेंस भी है, तो फिर मैं उसको जाके क्या अरेस्ट कर सकता हूँ. Okay, 10 codes. Why are they useful? सर 10 कोड्स इसलिए यूजफुल है कि कुछ भी हमें कम्युनिकेट करना हो डिस्पैच पे, तो फिर ज़्यादा किसी और को भी डिस्टर्ब ना हो और जो मैं कहना चाहता हूँ सब तक पहुँच भी जाए, इसलिए वो काम है. Do you have knowledge of 10 codes? यस सर. What's 1071? सर 1071 इज ऑफिसर डाउन. 77 and 78 में difference? 77 and 78 सर 77 बैकअप और 78 भी बैकअप होता है, लेकिन 77 में कि ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है और 78 में कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली चीज़ है. Okay. 99 और कोड 5 में difference? सर 1099 1099 कॉल और कोड 5 में difference? सर 1099 होता है कि सारे के सारे यूनिट्स जो भी ऑन ड्यूटी हैं वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करें, तो सर कोड 5 तो पता. And 1060? सर 1060 इज व्हीकल स्टोर है. 25 and 25? सर 1025 तो मेरे को अच्छे से तो नहीं याद, लेकिन शायद से कि एक जगह पे मीट करना. 32? क्या 1032? 1032 सर कि कोई आदमी है जिसपे गन. What are Miranda rights? सर मिरांडा राइट्स होते हैं कि जब भी मैं किसी को डिटेन या फिर अरेस्ट करता हूँ तो मेरे को उसको तुरंत वो राइट्स पढ़ के सुनानी होती हैं, जिससे कि उसे पता रहे कि उसके पास अभी क्या क्या राइट्स हैं. डिटेन और अरेस्ट दोनों कंडीशन में सुनानी होती है? यस सर. ठीक है. स्टीव सर कह रहे हैं. हाँ जी, so situational based question. Let's suppose there is a 1090A, which is a bank robbery, and you find your officer as a hostage. At that present moment, there is no high command Detain pe rights. officer on duty, and an officer who is same rank as Do you want me you to answer, Jahar? commands you to shoot them as soon as they come out. I mean, shoot them in the sense, shoot the robbers as soon as they come out of the bank. What will you do in this situation? सर मतलब ऑन ड्यूटी सिर्फ वो और मैं. हाँ जी. एक गाड़ी लेके सर चले तो क्या? फिर पहले तो मेरी टॉप प्रायोरिटी यही रहेगी कि हमारा ऑफिसर सेव हो, और वो जो कि कॉल है डिपेंड कि करता है डिटेन किस उनको सिचुएशन हम में शूट किया है कर दे, तो उसको. यही बड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम जैसे सिर्फ मान दो लो ही अगर वो हैं डिटेन और वो करने की कह रहे ज़्यादा हैं, वो हम कोऑपरेट नहीं आउटनंबर्ड कर हैं, रहा है, तो केस तो लाइक मेरे को होना इसमें ही ये नहीं. भी हो तब सकता सामने है भी कि दो ही वो robbers समझाते हैं. हैं
कि सर सामने बिल्कुल रिटेनमेंट में भी आपके सर पास सारे राइट्स हैं, मेरे ख्याल से पहले तो ठीक है, हमें उनको बट स्टार्टिंग 99% में टाइम जैसे नो। हमने अपना कॉप बचा लिया, जो भी मेरा कलीग है उसको मैंने बचा लिया, इंटरव्यू के लिए एक बंदा है लेके उसको लेके फिर हम पहले चेज ही करेंगे और फिर उनके क्लोज जाके हम उनके पहले टायर पॉप टाइलर करेंगे, Okay. उनको डायरेक्ट And शूट तो नहीं टाइलर करेंगे। रॉबर्ट all right. And मान लीजिए there are enough I know officers. I am also in an interview. क्या सर? Entry on the radio. I say let's say कि I there have are a enough candidate. officer. Business मान unit. लीजिए Come and 10 get officers the present हैं candidate to BCS. and there are 4 robbers. I need फिर a क्या confirmation. करेंगे आप? सर तब भी उनको शूट तो नहीं करेंगे, पहले वो यही होगा कि पहले वो हम अपने ऑफिसर को बचाते ही उनको चेज करके भाई टायर पॉप करके उनको रोकेंगे। All right. ठीक है. Let's suppose okay, ये next question है. You come on duty and you see a arrest warrant on a person named Rio and आप रियो को 15 दिन बाद देखते हो, रियो पे वारंट निकलता है ड्रग सेल्स का, ठीक है। सो ड्रग सेल्स का चार्ज रहता है उसके ऊपर एंड उसके ऊपर वारंट रहता है। आप बात तो 15 सही। दिन बाद उसको देखते हो फास्ट लेन में, व्हाट विल यू डू? सर एक वो अरेस्ट वारंट है उस पर। हाँ जी, अरेस्ट वारंट है सर। अरेस्ट वारंट सर मेरे उसको देखता हूँ तो फिर मैं उसको अरेस्ट तो पहले नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? सर अकॉर्डिंग टू एसओपी सर वो एक अरेस्ट वारंट सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड होता है। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑफिसर आप गो अहेड कीजिए। ओके, लेट्स सपोज यू आर गोइंग फॉर अ फुट चेज, ठीक है। आप एक सस्पेक्ट को फुट चेज यस कर सर। रहे हो, आपके हाथ में एक टेजर है, ठीक है, और यस उसके सर। हाथ में कुछ नहीं है। सडनली he tackles you and takes out his pistol from the यार pocket बट एक जितनी बात देर में आप बताओ, खड़े होते हो। इस सवाल का मेरे को आपका बैकअप पूछना थोड़ा है दूर है, कि आपके हाथ में अगर टेजर है और सस्पेक्ट के हाथ में पिस्टल है। सो हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन? सर मैं पहले तो अपनी एकदम वॉइस एकदम धीमी करके उसको बोलूंगा कि मतलब उसको ये ना लगे मैं उसको वॉयलेट कर रहा हूँ कुछ, तो फिर मैं एकदम उसको ऐसे बोलूंगा हाथ ऊपर करके कि है ना, ऐसा वो ना करे, इसके बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और ऐसे करके मैं उसको सिचुएशन जो भी है उसको मैं डीएस्केलेट करने की कोशिश करता रहूंगा जब तक, और मैं उससे टाइम बाय करता रहूंगा जब तक मेरा बैकअप जो है वो आ नहीं जाता। Okay, moving on to the priority calls. So I'm giving you 5 situations. आपको बताना है इन द असेंडिंग ऑर्डर कि आप किसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी को एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी उसको, ऐसे, ठीक है। ओके सर। सो देयर इज सिचुएशन ऑफ रॉबरी, अ ड्रग सेल, ईएमएस डाउन, ऑफिसर डाउन एंड अ हॉस्टेज सिचुएशन। These are the 5 एक रॉबरी, ड्रग बैंक सेल, ईएमएस रॉबरी, डाउन, ऑफिसर डाउन और सीधा लास्ट ऑफिसर क्या था? बना दो। हॉस्टेज सिचुएशन। हॉस्टल। चैट से कुछ क्वेश्चन पूछ लो। नहीं है सर यार, पता लगा कोई सुन मेरे रहा हिसाब हो से सबसे चुपचाप पहले से, तो मैं अपने ऑफिसर डाउन पर रिस्पॉन्ड करूंगा। है ना। किसी ने सुन लिया उसके फिर बाद मेरे लग जाएंगे। मैं ईएमएस पे रिस्पॉन्ड करूंगा। आई डोंट नो सर फिर दिस उसके गाइस, बाद बट लेट्स सी। एक हॉस्टेज, फिर बैंक रॉबरी क्या नाम बताया और इसने फिर ड्रग अपना? सेल। जॉन, राइट? जॉन स्पार्टन। Okay, so do you know what is chain of command? यस सर, इट इज कि मेरे को किसी ने कुछ बताया तो मेरे को एक दूसरे बंदे तक बताना है वही चीज। ठीक है। आपको या ऑफिसर्स को किसी और को कुछ पूछना है? नहीं जी, हो गया हमारा। Okay sir, so your interview answer, based upon your interview, how will you rate yourself from 0 to 10? सर आई थिंक आई विल रेट माई सेल्फ 7.5 to 8। Why 7.5 to 8? Why not 10 or why not 6? सर 10 तो आई थिंक सो कोई भी नहीं हो सकता सर, 10 इज लाइक परफेक्ट। ये कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो 10 तो इसलिए नहीं। और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को अभी भी सीखनी बाकी है, वरना फिर आज मैं इधर नहीं होता, आज मैं उधर होता, इसलिए। उधर किधर? आई हैव तो वन मतलब लास्ट उधर क्वेश्चन मतलब विद आपकी साइड। तुम्हारे जो रिस्पॉन्स अच्छा, है इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन। जॉन नाम है हाँ तुम्हारा, सर। राइट? यस सर। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? सर एरोगेंस सर ये है कि
कोई भी जैसे आपको कुछ फीडबैक भी देता है तो आपको लगता है कि नहीं मतलब कोई मैं गलत हो ही नहीं सकता ऐसे करके, तो आई थिंक दैट इज एरोगेंस। एंड कॉन्फिडेंस इज सर कि मतलब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस है, मैं कर ही सकता हूँ ऐसे। कोई भी मतलब मेरे को बोले कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तब भी। All right. Thanks, John. Thanks for your time today. We conclude your interview here. We'll share the feedback with the HR, and should you get selected, the HR will get back to you the next 2 or 3 days. थैंक यू सर। All right. Have a good day. Thanks for coming. यू टू सर। स्टीव सर मेरे को भी टैग कर दो यार उसमें, निक फ्यूरी आप जो कर रहे हो। कुछ पीने का है किसी के पास? इससे अरे, पहले मैं खेलता हूँ। मैं तो वो डाल रहा हूँ ना, ये दोनों लिस्ट में डाल दे, आप भी डालो। पीने का मैं देता हूँ। हाँ हाँ, मैंने वहाँ लिस्ट में अपडेट किया हुआ है। वाह वाह, रुको दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो फर्स्ट वाला बंदा था सबसे फर्स्ट, उसका थोड़ा सा तिगड़म वो है, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स जो तुमने डाला है कोस्टा, ठीक है, हाँ, तो क्या? उसको अभी कंसिडर नहीं करना है, उस पे रिवर्क करना है। नहीं, मैं तो अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, आगे जो भी ये हाई अपना कमांड का है फीडबैक है, वो फाइनल शीट पे अपन अपडेट करेंगे ना सर। अच्छा, बात मेरे कर लेंगे एक को बार बाद में। एक चीज और है कि आई गेस कोई और ही किसी ने अपडेट किया क्या हम चारों में से लिस्ट पे? मैं लिस्ट पे कर रहा हूँ, मैं लिस्ट पे कर मैं कर तुम रहा ही कर रहे हो? नहीं, अभी मत करो आप, वो साइड में आप कहीं पॉइंट लिखना नोटपैड वगैरह पे। नहीं, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि हमें ध्यान रहे। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। क्योंकि मैं वो लिस्ट पे अपडेट करके ना अपने पास कॉपी भी कर रहा हूँ, ताकि हमें ध्यान रहे कि मेरे को स्टीव से किसके बारे में बात करनी वाला। ये जॉन विल्सन था ना अभी? जॉन स्पार्टन। जॉन विल्सन, जॉन स्पार्टन था, स्पार्टन। मैं जानबूझ के अपडेट कर रहा हूँ ताकि आई नो कि हमें किसके बारे में डिस्कस करना है। जॉन विल्सन नहीं, और कोई विल्सन हम डिपार्टमेंट में नहीं लेंगे। साउंड्स लाइक जेडब्ल्यू जॉन विल्सन फैमिली रियूनाइट। नहीं यार, यूनाइटेड वर्ड मत बोला करो यार। जॉन और विल्सन। टॉपिक चेंज करेंगे हम, और कोई कैडेट चलो है नीचे? ठीक है भाई। और कोई है क्या फ्यूरी जी? हाँ, एक और लास्ट है, मैं बुलाता हूँ। वो कहाँ है अपना रॉबर्ट? उन लोग ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, ले रहे हैं, ले रहे हैं। देखता हूँ मैं एक सेकंड। 1 more minute, sir, 1 minute. Yeah, रॉबर्ट Good evening, sir. Evening. What's your name? Vikramaditya, sir. विक्रम। एक मिनट। शेरलॉक कौन है? रौनक, मुझे पता ही नहीं शेरलॉक कौन है। चलिए जी, कंटिन्यू करें। हाँ, चलिए आ जाइए आइए विक्रम, प्लीज कम इन सर। Good evening, sir. Good evening, very good evening. All right, good evening. How long have you been waiting? It's like 2 hours, sir. Okay, you good with food and water? Yes, sir, I'm good. Come forward, please. Come a little forward. Stand here. A little more. Thanks. And be loud. Okay, you can hear me, right? Yes, sir. Yes. All right, Vikram, right? Yes, sir. Vikram, first of all, welcome. And thank you for keeping patience for last 2 hours. There are 4 officers here, namely Nick Fury, Slade, Steve Kingston, and John Costa. All right. Okay, there will be a series of questions wherein all 4 of us will ask you different questions. And you will have about 1 to 2 minutes to answer all the questions. If you do not know the answer, simply say that you do not know, so that we can move on to the next question. Okay, sir. All right. Now the next thing is, Yes, this interview might have some questions that might, you think that something is not right, but be aware that, we are just looking for somebody who's not just physically strong, but mentally stable as well. Okay, sir. All right. With that being said, Vikram, why don't you tell us something about yourself? Yeah, myself, Vikramaditya, born on like 1995, July 31st. I'm from India. Birthplace is Andhra Pradesh.
कैसे speak दिया? three languages, साले Telugu, मैनिएक्स Hindi, and पूरा रट English, के आया था क्या तू? in which I can speak English fluently. I completed my bachelor's in arts, and I'm physically, to be honest, I'm good in driving vehicles or something. Okay. And What my brings you to hobbies are US? US because my parents decided to vacate India, got some pretty bad loans and stuff. Need to complete रट्टा them मारा and to मैं, earn ठीक some है money. ठीक है. They shipped it to US. Yes, so I have to come with them, right? What Okay. attracts you towards the LEO duty here at Los Santos? To be honest, since my childhood, I like being a police officer, but because of my parents' shit, I have to leave India, right? So here also, I can be a police officer. मैनेक्स अभी तो सिर्फ चैट ही बता सकती है, मैं तो नहीं बता Yep, सकता that's कैसा हुआ. my main thing. What name a few qualities that you have to become an officer, that an officer should have, and you have them? First thing is courage. Second thing is always I speak the truth. Whatever it be the outcome, I say speak the truth on that spot. And third thing, I have good memory power. Yep. I Sorry, guess what was the first one again? Courage. Okay. Courage, honesty, and third one? Third one will be good memory power. Intelligence. What is the primary weapon of an officer? It will be voice. Why? Because we try to negotiate. So during negotiation, our voice should be the first one to speak, right? Results will be out Hmm. So I'll come to situational based questions now. Okay, sir. There are two hostage situations going on simultaneously in the city. Okay, One sir. is a civilian hostage and one is an LEO, your colleague basically. Okay, sir. What will you respond to first? Which First, situation? I'll respond to Leo, hostage situation, because when I am a Leo, another Leo should be my first priority. What if there was an EMS doctor in place of that officer? Even it be a doctor, officer will be the first priority. Okay. An EMS and a civilian? Even in that space, I guess it will be an officer. No, there is no officer. There's an EMS doctor and a civilian. Both are hostage at different locations. Okay, I'll go to the doctor first. Why? Because doctors saves many lives than a civilian. He's a doctor who treats people, right? Okay. Do you have any knowledge of functioning of an LEO? About the functioning of an LEO? प्यूरी बोलते yes, बोलते sir. इतना शांत हो जाता ना, डाउन हो What जाता ना, are कुछ Not सुना ही pretty नहीं much, था. but yeah, I have little. SOP is a standard operating procedure, full form. It's mainly to, like the set of rules and regulations for a LEO to operate on a daily basis. Why are they categorized as rules? What if I break an SOP? It will be on the higher command to what action to take against you. Do Mostly, you I think SOPs guess. are applicable in all situations? Should be applicable in all situations, or just a few? Yes, sir, it should be. Okay. What is the chain of command? Chain of command is that you, whatever it be the situation, you should listen to the commands given by your higher ranking officer. So you get a report, a possible hostage situation. Okay. You have a senior officer, a sergeant, a corporal, and chief available on duty right in front of you. Okay, sir. Who will you go to first? A senior officer, of course.
Because if I am I'm going for a cadet, right? If no officer is available, after that I should go to the senior officer. Then senior officer should go to the corporal, then to the sergeant, then to the chief. Okay. You are riding along with a senior officer near Guru Street. Okay, sir. Your officer gets you guys did a family stop on a Morgan, suppose, and then there is one more car pulls out, and they all four point the gun at your senior officer. They try to make him hostage. What will be your response to that situation? Like we both are in a car, right? Patrolling. Europe, जैसा Yep. हाँ लग रहा है राजीव. Good observation यार राजीव First, I'll भाई. stay calm and we'll try to get like who is he making him Very or both of us very hostage. Jude observation. If they're Jude. trying to They're make my focusing senior on him. officer him, then I will just try going make some safe distance between them. First, give a call for backup, and I'll just tell them what's going on. Like there's a hostage situation. Hostage is our officer. Need emergency additionals like backup. You have your gun out, and there is only one guy that's trying to take your. You have your gun out. You were out there somewhere else, and when you come back to the vehicle unit, you see your senior officer being held hostage at gunpoint by just one guy. And you Okay. have your gun out. He's pointing the gun at your लग तो रहा है officer. राजीव भाई Your तुमने officer देखी है has कौन both his hands up, no weapon in his. मान दिया. Weapon is in his holsters. What Okay, will sir. be your response? Firstly, I will just try to negotiate with him, and during the negotiation, I'll just try to give a call on the radio or something that I need backup or officer is held hostage. It is basically a one-on-one situation. You're Only trained. one-on-one? You are a trained officer. Just one guy pointing a gun at your senior officer. Senior officer has no firearm. You have a firearm out. Yep, it's a one-on-one What will be your situation, but response? he is on a gunpoint. So first, I'll just try to negotiate and take deviation on him. Okay, so he's trying to flee when you come back to the scene. He's trying to. Okay. Your officer is covered inside the vehicle. He's trying to flee. Your gun is out. What will you do? If I get to know that my officer is like safe from danger, then I will try to open fire on his shoulders and legs. Okay. Slade, continue. Slade. Steve sir, आप ले लो. I'm listening. अच्छा. Vikram. Okay. Am I Yes, sir. audible? Yes, sir, you are. Vikram, what do you think is more important? Your pride or your duty? Of course, duty, sir. Okay. Situation-based question. Okay. Okay, sir. Let's say I am the high command. Steve sir Okay. next to me is also high command. We both are on the same rank. You're a senior officer, and Fury on my right side is a corporal. Okay, sir. Fury is stationed at BCC office. We both are in Palito, and you are somewhere on the Great Ocean Highway. Okay. Okay. You hear something on the radio, the dispatch, that signaled you that either myself or Steve are in danger. The call was something like this: I need back, and then I went quiet. And the same thing Okay. you heard from Steve as well. Dispatch, this is this person needing 7, and then. But then you see Okay. this, when you tap the radio. So you somehow calculated that it's a distress call. You're on the Okay. Great Ocean Highway. On one side of Palito, it's my tracker. On one side of Palito, it's Steve's tracker. Take care. Fury is in BCLC office where we're standing right now. What Okay, would sir. you do? Would you wait for Fury to come to you, then you approach to us, or would you directly jump in? And if you jump in, who will you jump to first? Firstly, two of our high commands are
not in danger. So I can pretty guess that there are more than 2 suspects there. Like, yeah, I will use the word suspects there. So I will just try calling our senior officers on duty and our Fury sir. Yeah, I will just wait for them first. Because we, not any Superman or something just to go ठीक है, inside. समझ लो कि फ्यूरी आ गया आपके पास. Okay. Then you see our tracker on the GPS. We both are almost 1 block away from each other. Okay. किसके पास जाओगे आप पहले? Let's suppose you're a BCSO officer. I'm a BCSO high command. He's a LSPD Okay. high command. Who would you reach out to first? If Fury sir is a LSPD corporal, Wings can interview. I then don't will know send why. him to. No. Both of us first come. Whoever is near to us, first we'll try. If the situation is not, heated up, like shots fire or something, we'll try negotiating. If the situation is under control, then I myself will go to Steve sir for negotiating. Let's just say that Okay. while Fury was coming to you and he almost reached, you received another call from another officer who just came on duty and he said that I am on duty available now. Right, but I'm being taken hostage. I need urgent help. Now, from Steve and mine, you didn't get a 78 call, but you got a call like, I need 7. That's it. That's a distress call. And then another Yes, sir. officer came on duty who clearly said that I'm being taken hostage. I need urgent help. What would you do? Than a 78 call, I guess distress call is more, high, more in priority. So I'll first try going to Steve sirs because they are high commands, right? Okay. All right, my next question. Do you know what 10 codes are? Yes, sir. Let's just say that I give a Not call on the but radio that I'm 10744. What does that mean? 10-7. You are in service, but like off duty. Okay, and Like what is on duty, but out 44? of service. Yeah. What is 1044? 1044 will be and like, I don't remember. Sir. Okay. The difference between code 2 and code 3? Code 2 will be lights on and sirens off. Code 3 will be lights on and sirens on, which is only used in time of emergency and pursuits. Just imagine you're at BCSO office and you receive a call from your senior that you need to perform a code 6 at Palito Bay. What does that mean? Sir, like searching the area. Code 6 means searching the specific area. Okay, let's just assume that you are stationed at Amma PD. You receive a 911 that something terribly wrong is being done at Uwu Cafe. And the Uwu Cafe owner is a very good friend of yours and is a very reputed man, for instance. This is a hypothetical situation, okay? Okay, sir. You responded there, you did not see anything unusual, but there are only 2 persons. One person is down, another person is up, which is your friend who's up. And the call was made that somebody is hitting me. You do not see anybody else there. But you know for a fact कि जो दूसरा बंदा है जो stand कर रहा है is a very reputed man and he's your friend as well. What would you do? Whatever be his reputation, whatever whether he's my friend or not, for that situation, he is a suspect, primary suspect. So we should call him for an investigation. So what would apply there? Probable cause or reasonable suspicion? I would say probable cause. Why? Why not reasonable suspicion? आपको शक है उस पे. आपने देखा थोड़ी है होते हुए. When you reach there, you saw nothing unusual happening. You just saw one person down bleeding, another person standing on top of him, doing nothing, just standing. Yeah. Because I don't see any like proof on him. If he is carrying any lethal item, for example, let's take a knife or weapon on him, then I can go for like I can say that I have a witness or like not witness, sorry, correction. I have some proof against him that he's carrying like lethal when I was on the situation. But you didn't For see that, him with a lethal. Would you go and search him? that's I should frisk him first.
44 is lunch break, Rajiv. Yeah, of course I will frisk him. You'll frisk him. Yes, sir. But the person says you cannot even touch me without my lawyer. Then what would you do? According to probable cause, we can frisk them, I guess. So you're applying probable cause here. Okay. All right, another situation. Let's just say that you and another colleague of yours, who happens to be a male officer, are patrolling near the highway. You receive a suspicious handoff call near pier. You go there. You see a lady trying to argue with a local citizen, and when he's not listening, she pushed him. And then you see her that while he was pushed away, she's putting something in his pocket. What would you do? Like she's putting something in the pocket, right? Yeah, you saw it happening. Okay, even if I saw it, as she is a female, we should not, touch her. We should call for an female officer. If There is anyone's nobody not available. on duty, Nobody available. then Just I two would ask her officers are to, available. yeah, I would ask her to take it out gently. If she resists it, then we have to go for a search. Would you arrest him or would you detain him? Detainment. Detain. Yes. Why? Why not arrest? Arrest only is done when you have a warrant or materialistic proof against it. But I said you received a suspicious handoff call, and she's the only one there, and you saw her putting something in somebody's pocket. Yet you will not arrest her. I'm not getting it. Like, I can't answer for this. Sorry? I can't answer this now. Okay, no problem. We'll move on to my last question. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. My last question would be, let's just suppose that you went on LOA, leave of absence, for 5 days. Okay, sir. Okay, sir. You came back, right? And before going to LOA of 5 days, you requested for a seizure warrant for a certain car. Belongs to a certain person named, let's say, Leo. Okay. You came back on duty, and the guy came back showing off his car to you one more time and speeded again in front of you. What would you do? If And he luckily is his car speeding, broke. His car broke. And he's running. What would you do? yeah, if he is He was just speeding speeding. Just speeding, yeah. Nothing else. up, like a tire burnout or going fast. He's going fast. He's above, let's say, city speed limits 55. City limits are 35. He's at 55. Yeah, But I will he's pull making a over and mockery drop. of you every time. Yeah, whatever he says, I should not, get angry and misuse my power. Mhm. I should pull him over if his car is broke. I will just Okay. ask him to get out peacefully. According to the charges, I will drop him over speeding charge. That's it. That's it. So you will not And arrest him. whatever, yeah, if the charge says you should arrest him and drop in jail like 5 months No. and a It's just a 500 speeding. pesos fine. Speeding. He's speeding. No, I will not jail him. Okay. You will not arrest him. I will not arrest him. Yeah. And you will find him and you will let him go. Yes, sir. I will. What about the seizure warrant that you had? I guess it expires like in 3 days, if I'm not wrong. Okay. That would be all from my side. Yes, sir. Yeah. Can you tell me the conditions under which must be present for you to initiate a code red, or for Wait. police to initiate a code red first? No ideas. All right. That'll be it from my side. Costa, wait, what? Okay. So since he's not here, we'll conclude your interview here. Do you have any questions for us Yes, sir. before you leave? No, sir. ठीक है. Peter, do you have any more questions? I think Costa वाले questions let's ask दो करके दो questions for Sure. from Costa's side also.
All right. So are you we'll be aware of? asking you 10 codes, right? Okay, sir. Will you go ahead, please? Sorry. Are you aware of 10 codes? Yes, sir. Like not everything, but I have little. What's 1071? Hello. 1071 will be officer down. What's 1074? 1074 will be like fight, I guess. Yeah. 44? 1044, no idea, sir. 1032? Those who are taking the interviews, 1032 will be please the weapon, person is carrying a lethal item. 1060? जो dispatch room पे ले रहा है 1060 interviews, will be tell him no to idea, sir. whisper. I guess stolen vehicle. Yeah. 1060. So Yeah. give a call that a vehicle has a hostage and You're referring to mission room, right? No, this is there are office. two let him complete the call first. Yes. Okay. Yeah. Okay. So there are two suspects and one hostage. They're leaving. They're basically running in a vehicle. What will be the call for that? First, I will tell my dispatch. This is let's assume my call sign is 500. Dispatch is 500. We have a 72 situation here. इस कोष्ठा के साथ मैंने 20 इतने is वो let's दिए ना, assume Legion Square. इतनी 20 is ड्यूटी दी Legion है, Square. चोंग गायब हो गया था बहुत लंबे टाइम के लिए. So there are three suspects in a vehicle with one hostage. Vehicle description is a black color sedan. Needs 78. Yeah. Direction and all. Yes, if they're fleeing in a southwest bound, it will be like they're going southwest. They're heading southwest bound. Let it be towards pillbox. Yeah. Okay, Slade. Slade. Pucho. Yeah. No, I'm done. I asked him 10 codes. Steve sir, 10 codes or anything? 1091. 1091 will be requesting transport unit. Okay. And a situational based question. You're in a 1080 of a 1090 Vangelico robbery, and you got a call of 1090 bank robbery, and there are only 5 officers on duty at that particular time. What will you do to continue or go for the chase on that bank robbery wala 90? We are 5, right? I will ask one officer to back off and hold the situation of the bank robbery until we complete the chase. All right. Because in a pursuit, two units must, like one unit should carry 2 officers minimum, until unless it's an interceptor. So I would ask one of our officer to back off and go to the robbery to hold it until we come back. Okay. So that will be it from my side. All right, Vikram, thank you for coming, and we conclude your interview here. Should you get selected, the HR will get back to you in next 2 or 3 days. Thank you, sir. All right, thank you for your visit. Have a good one. Thank you. Good day, sir. भाई हमने टोटल हाँ खुला है 5 ले लिए हैं, ठीक है. दूसरे लोगों ने 3 और 4 बच लिए, तो मैं तो कहता हूँ अपना डन करते हैं. हमारा डन हो गया आज का. डन है अपना डन है. मैं जाता हूँ जिम, है ना, जाके रॉड उठाता हूँ, सर्वर फाड़ता हूँ, मस्त. चलो देखते हैं बॉडी बनती है तुम्हारी नहीं बनती. सामने तो क्या सिर्फ आवाज ही भारी हो रही है, शरीर भी भारी होगा, देखते हैं. हो गया फ्यूरी भैया, फ्यूरी आजकल इतना बहुत है. फ्यूरी अरे ये तो भागा जा रहा है. लग रहा है ये और 5-6 ले लेगा लग रहा है. नहीं और नहीं भाई, मैक्स टू मैक्स अगर बहुत हुआ तो एक ले लूंगा. नहीं हो गए, बंदे हो गए, आज के लिए खत्म हो गया ना. फीडबैक मैं आज शाम तक अपलोड करता हूँ, प्रोबब्ली हम वो सब करके. मैंने 2 बंदों का फीडबैक डाल दिया है, मतलब वो लिस्ट पे अपडेट कर दिया है, जो कि मेरे को काफी एक्यूरेट लगा. किसका डाला नाम बता देता हूँ.
आओ बाहर डिस्कस करते हैं, बाहर आ जाओ। माइकी जोन्स और वजीर बारह जरदारी, 12 ओके ठीक है। और जो नंबर 1 वाला वजीर थोड़ा गलत ठीक डला है। हुआ है, आई डोंट थिंक सो वो आई थिंक मेरी तरफ से तो नहीं है अभी सूटेड। कौन हाँ कौन हाँ कौन वही कौन इसीलिए नंबर 1 फर्स्ट का है बंदा एस्टन हिल। एस्टन हिल, वो बाद में डिस्कस करेंगे है ना सेकंड उसका। हाँ क्या ठीक क्या है, ठीक है, मतलब ठीक है। फीडबैक तो बताओ, लाइक क्या है एक फर्स्ट guy was not suitable. He had very less knowledge and confidence भी हाँ कम है and मतलब mental वो भी थोड़ा अभी डेवलप करना बाकी है आई थिंक। ओके। अभी वाला जो आया था वो काफी मैच्योर्ड लग रहा था और सही भी ये लग रहा दिस था guy मेरे was the safest bet, मतलब he was को, है not, ना। देखो जो इससे पहले आया था ना he was confident, ठीक है, तो he was kind of a person who can take command also, मतलब I ट्रू would recommend to take command also. This guy was very safe. He will follow commands and he will not make एग्जैक्टली mistakes. He will not make stupid mistakes. He'll be मतलब द सेफेस्ट, मतलब समझो गलतियां करने के चांसेस ट्रू कम है, बट आउट ऑफ वो होगा तो अलग बात है। थॉमस शेल्बी देखा है, पता है थॉमस शेल्बी? हाँ हम्म थॉमस शेल्बी आई सी अ सेकंड थॉमस शेल्बी है। एग्जैक्टली भाई। ठीक है, नेवरदलेस थोड़ी देर इससे कोड पे पहले चलते वाला हैं जो फिर बंदा आगे की था जगह। व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इस इज इट, अभी वाले जॉन बंदे का नाम नाम क्या था? इससे पहले वाले का नाम जॉन था, इसका नाम विक्रम था। हाँ उससे पहले वाले का नाम जॉन स्पार्टन था, जॉन विल्सन जॉन स्पार्टन। सबसे पहले वाले का नाम एस्टन था, उससे पहले वाले का नाम, उसके बाद वाले वजीर नाम था। टोटल 5 लिए हमने। सही है। आओ चलो उनका इंटरव्यू देखते हैं, साइड में खड़े होंगे। चलो था पहले बार मैंने ये इस बार पे बोला था, पर मेरे को थोड़े पे डाउट जा है। ठीक है, आपको जितना मैं तो जा है रहा हूँ उतना off बता duty। दीजिए। सो प्रोबेबल मींस कि प्रोबेबल रीजन मींस कि ये कुछ प्रोबेबल सिचुएशन होगी क्या, फिर कुछ ये आई थिंक सिमिलर टू डिटेन में भी, एंड वो रीजनेबल क्लॉज मतलब कि इसने कुछ किया ही होगा, वी हैव फुल ऑफ एविडेंस, कोड तो वहाँ पे हम वो रीजनेबल कॉज कहेंगे। Uh, 42 जा रहा Tyler, हूँ फिर मैं, can you come काफी aside, काम है please? मेरे को। 42 जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, हमारे 5 हो गए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो और कोई क्रेडिट बाकी है। नहीं और नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितने किए यहाँ पर? यू हैव नंबर्स? यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिए थे, उसमें से एक का तो आधा ही हुआ है, 3.5 पकड़ लो। ठीक है, हमारे 5 कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमने पहले एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई थी, बाद में हमने वो स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, उसकी वजह से हमारा बहुत टाइम बचा। ये कर लो फिर। चेक कर रहा हूँ कुछ नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है बाबा, अपन ने तो अपडेट कर दिया जो करना था। अभी कोई हर्डल तो नहीं है ना इसके बाद टाइलर? जो सिचुएशन है वो कुछ नहीं फिलहाल तो नहीं है अभी। और तो अपन जा सकते हैं ऑफ ड्यूटी? ऑफ ड्यूटी तो अरे मतलब सोने जा सकते हैं? हाँ तो जाओ जाओ। हाँ पहले ही चलते जैसे कि हैं। प्राइमरी फिर ही? अगर मैं होता हूँ प्राइमरी में, अपार्ट्स तो टोटा? मैं कॉल दूंगा, मैं सेकंड क्या? पे कॉल दूंगा कि अपार्ट्स आ टोटा? जा आ जा आ जा, चल फटाफट आ जा, आप फटाफट। चलो। ये सिविलियन को बचाओ, क्योंकि सिविलियन की जान भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं सेकंड चलो बॉयस, आज के लिए बहुत हुआ, ठीक है। 846 showing 41 42 for the day। कल आते हैं, कल करेंगे अब बाकी आपकी। हमने अपना काम कर दिया। 335 सेम ट्रैफिक। हैव अ गुड डे बॉस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू 6000 लव यू